ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड सेशन में खुश आमदीद। जी बिलाल, क्या हाल है? आप ठीक है? अल्लाह करम सर, आप खैरियत से? जी जरूर, स्टार्ट करेंगे। दिस सेशन इज a review on causality, time invariance and linearity uh, with some examples, and similarly we then see the impulse response and transfer function, जो कि इसके हमारे सेशन का मेन जो टॉपिक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज कॉजलिटी। इसको अगरचे एक आसान तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, बट द बुक एक्चुअली डिफाइन कॉजलिटी दैट कंसिडर a state space system which is continuous, state space continuous linear time variable system, that we have two inputs u and similarly another u dash t. They can appear at any time t between 0 to t. So in an interval, we have two inputs of similar nature. So for some time t which is greater than 0, if there is a process which primarily relate u to v, y, the input to y, then there exists an output y dash, and in such a way that the both inputs are equal uh, within that particular time interval. So इसको दो तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है। वन मेथड ये है कि द आउटपुट इज़ नॉट प्राइमरली डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर इनपुट्स। So and another definition is that the output is not affected by the output is only dependent on the past inputs. So there are multiple ways to define it. इसको थोड़ा एक एग्जांपल से कर लेते हैं और फिर ये हम इसको दोबारा से डेफिनेशन को देखेंगे. So in this example, which is a causal system, so considering from 0 to t, we have an input, and similarly in that span we have another input which is the same input during this time interval. Okay, within the bound of this time interval, the inputs are the same. So in that case, if the output are also same in that time interval, then we can say this is a example of a causal system. But if it is not the case that for the both inputs are the same but the system response is not primarily equal, so in this case y dash is not equal to y. So we have a system which is a non-causal system. अगर हम इसका कैप्शन पढ़ें, so for two inputs u and u dash that are equal to each other up to some time t, there must exist two outputs that are also equal to each other up to the same time t or within the same time t. इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद हमें एक दफ़ा फिर इस डेफिनेशन को देखना है. So if we consider a system in which we have the input, input के लिए थोड़ा कलर दूसरा यूज़ किया गया है. So we have an input x and we have output y. So this is the input, and similarly here this is the input, and the red color is used for the output. So this is the output, and similarly this is the output of the system. In this case, you can see the output primarily starts early before the input primarily comes. So whereas in this case, the output primarily follows the input. So this is another definition which is defined in the next slide. So that the system y t is x
T minus 1, which is nothing but an advanced version, is a causal system because its output is a time delayed version of the original signal. So it is actually defined in another way. The output is a time delayed version, uh, can be considered as a causal system. Whereas in this case it is not. तो जब भी हमें इक्वेशन के अंदर जो है वो t माइनस डिलेड एलिमेंट जो है वो नजर आता है, so then we can consider it as a causal system according to this example. Moving towards the definition again. So the causal system is defined in a way that the two inputs which appear during a time interval, and these two inputs are different and but are equal during this particular time interval, then the system is called causal if the output will remain the same in that time interval. So this is the definition of a causal system. Now the second is time invariance. Okay, so time invariance is defined as a for the case of time invariant system. इससे पहले जो define किया गया था causal system को, that is in the time varying system. So the state space linear time invariant system is in the sense that we have given two input signals such that the one input is a delayed version of that means the inputs are the same but they are a delayed version in time. ठीक है, ये एक इनपुट जो है ये थोड़ा टाइम डिले के साथ अपीयर हो रही है. So in this case we get the same output but with a delayed version. So we get the same output but there is a delay inside. इसको एक और डेफिनेशन से भी सीखे समझेंगे. So in this case, the example which is given by the book is in the case of time invariant system, इसमें time effect नहीं कर रहा. So the both inputs are the same but a time delay version with a time delayed version. So we get the same pattern on the output. So we can say these outputs are the same but with a difference in time delay. Whereas in this case, the inputs are the same, but as you can see, the output are the same. So in this case, we get the output are not the same. With obviously, we can say with time delay, जो कि मैं यहाँ शो किया हुआ t plus t after some time. So this is the definition of a time invariant system. So how we can check a system is time invariant or not with some examples. So in this case, as we can see, the same signal at three different times. Okay, at three different times, the same x of t with a delayed version with minus t minus 1 over t 1 over 2 and similarly t minus 1. So three version of the same signal, and if we can say after transformation we are using this definition of the transformation, we get these outputs. As you can see, these outputs are not the same outputs. So this system is not a time invariant system. So at different points, the same inputs are causing a different output. Whereas in the next example, if we consider a system xt square, and we check after this transformation, we draw the transformed signal, and then we can see the same output or the transformed signal remains the same for the inputs. जैसे ये middle वाली orange line में show हो रही है, orange color में we get the same output which is a delayed version of the
transformed, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट सेम, वी आर गेटिंग द सेम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। लिनियरिटी को डिस्कस करते हैं। इन ए लिनियरिटी वी हैव ए सिस्टम in which the state space system is said to be linear in the sense that any two given inputs and two scalar values, if we have two blocks or the two ये represent करने के लिए, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, it is a system, then we can define system in this way, that the alpha multiplied with the input 1 plus beta multiplied with the output 2 is primarily the output 1 and output 2. It's a sum and the output is multiplied with the alpha. So a link between u to y in this case is alpha u, it is primarily u leads to alpha 1, and the sum, that is u1 plus u2, leads to y1 plus y2, and if we use this property in both cases we get this term. कुछ स्टेप्स जो है इसमें उसमें इतने डिटेल में नहीं बताते डेफिनेशन के अंदर, इसको कैसे हम देखेंगे by using examples. So first we consider that mathematically we can define the linearity in this way, that the transformation when it is applied to a linear combination, it is equal to the individual जो transformations जो है उनको apply करने के बाद उनका जो linear combination जो है वो ले लिया जाए. So if we consider a is equal to b is equal to 1, then the sum of the both inputs is equal to and the transformation of the sum of the both inputs is equal to the sum of the individual transformations. यानी individual transformation लेने के बाद अब अगर हम इस चीज़ को साबर ग्राफ की मदद से या किसी भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से प्रूफ कर दें, देन जो है वो जो सिस्टम होगा या जो फंक्शन गिवन होगा उसको हम कह सकते हैं इट इज़ ए लीनियर फंक्शन. आई एम श्योर कि आप इन कंसेप्ट से ऑलरेडी फेमिलियर हैं. सो इफ वी ड्रा two functions x1 and x2. So these two the function t has some period and it's a periodic function, it repeats itself after some time. So there are two functions. Now we define one transformation, ताकि उस ट्रांसफॉर्मेशन हमें डिफाइन करना होगा, फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन के अगेंस्ट हम जो है वो कह सकेंगे कि दिस इज ए लीनियर सिस्टम, दीज टू प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूट्स ए लीनियर सिस्टम. तो इसमें अगर आप देखें दिस इज द सेम डायग्राम जो अभी हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं. देन इन दिस डायग्राम ऑन द राइट साइड मैं इसको बड़ा करना पड़ेगा. This is the primarily transformation of x2, x1 and x2. So this is the transformation. We are considering this transformation yt is equal to 2xt. इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम कंसिडर करेंगे so then t will be we multiplied x with 2. So that's why अगर हम इसका देखें कि सिर्फ साइन पे अगर आप देखें, सो साइन इज प्राइमरली फ्रॉम 1 to -1 ऑलमोस्ट.
और इसमें आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप साइन को देखें तो साइन इज फ्रॉम -2 to 2. Okay, so this is the effect of transformation. And similarly the value after the transformation जो t के ऊपर हमने लगाया है, t is from 2 to -2 to 0, 0 to 2, and here t is from 0 to 4. So effectively we multiply both to have a different primarily after transformation. तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है. You just see how this transformation affect the x1 and x2. So we get this primarily, and if we add these two transformations, we get this red line. Okay? तो इसको मैं बड़ा करना चाहूँगा. एक मिनट में ये मिटा लूँ ये जो एनोटेशंस है. इसके बाद थोड़ा सा इसको मैं बड़ा, इस स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा. आप देख सकते हैं कि the transformation x1 of t is sin t and the transformation of x2 t is equal to t. And the transformation of the sum of x1 t plus x2 t. When we add these two transformations, we get this red line, and this red line is this primary line. Okay? और ये रिपीट करती जा रही है. Okay, so we have now gone through this input graph and this transformation graph, and then now we come to words how we can primarily prove that the sum of both signals is primarily, and we take the transformation is equal to the sum of the individual transformations. Okay, so for this we primarily superimpose both expressions into one graph. इनको हम एक ही ग्राफ में जो है वो सुपर इम्पोज करते हैं. तो सुपर इम्पोज करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा जो आंसर है वो एक ही कर्व है. और इसमें चूंकि ये अगर आप देखें इसमें एक ब्लू डॉटेड लाइन है और एक रेड लाइन है. रेड लाइन वही है जो ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखी, और जो ये ब्लू लाइन है जो इस रेड लाइन के ऊपर डॉटेड में अपीयर हो रही है, ये प्राइमरीली सम ऑफ individual transformations, and some of the original transformations overlaps. So we say that this system जो कि primarily यहाँ हमने define किया है, it is a linear system for these जो हमारे पास जो है values, these expressions. इन expressions के लिए ये linear. अब एक non linear की भी example कर लेते हैं so that we can better understand. So वैसे भी हमें नजर ही आ रहा है 2xt is primarily a linear expression. Now we take another example in which we take a non-linear system, and similarly we primarily want to check if this expression holds for this signal. हाँ, हम जानते हैं कि ये एक non-linear system है, but how we can mathematically or graphically prove this? Okay, so we do the same thing. We primarily plot both the transformation, यानी जो sum का transformation है और जो individual sum का transformation है. And after the plot, we see that these two plots do not overlap with each other, because these two do not perfectly overlap. So we say that this is a example of a non-linear system. We are familiar with the definition.
कि जो सिस्टम है वो नॉन लीनियर और लीनियर कब होता है, but this is a way how we can graphically primarily prove that two systems are primarily linear or non-linear by using this expression. So, what are the linear operations? Because when the system becomes linear, we then perform different operations on it. We can scale, we can time shift, and similarly, we can primarily scale the argument of the signal internally. And similarly, we can take a combination of above three. इनको हम combine कर सकते हैं एक ही expression में. Still we get a system which is a linear system, and summation of the terms that are linear. We can add the system. So these are the operations. So what are the particular non-linear operations? The non-linear operations है वो क्या है? When we multiply the signals with itself, or we take some non-linear functions, for example sine, and similarly when we add the constant terms, so which are independent of the signal, so that makes the system non-linear. So if there is a relation between linearity, causality, and time invariance, unfortunately, these are three independent relations जो हमें अभी जो है वो देख के आए हैं. टाइम इन्वेरियंस के लिए अगर हम देखें तो टाइम इन्वेरियंस के लिए वी डिफाइन दैट कि जो आउटपुट है फॉर टू सिमिलर two time delayed version of the inputs, we get the time delayed version of the outputs. ये इसकी टाइम इनवेरियंस की डेफिनेशन थी. कॉजलिटी में हमने देखा कि there are different definitions, but one definition is the output is dependent on the primarily present in the past inputs, and output is not primarily affected by the future input. This is one of the definition, and the linearity has a definition in which a linear combination of the inputs, a transformed version, is equal to the transformed version is then a linear combination of the transformed versions. So in this way, we can take some examples. Those examples clearly show that there is no simple relation between these quantities. We can have a non-linear system, which is causal system, and also time invariant. Similarly we can have a linear, causal, and time variant system. And similarly we can have a linear, non-causal, time invariant system. And so because these are three different, there are 8 combinations possible, so examples can vary, and so the property, it is not likely कि कोई particular system जो है वो following the same set of properties. So each system has different set of properties and characteristics. यहाँ एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना चाहूँगा ताकि स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन. जी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, बिकॉज इट्स जस्ट ए रिफ्रेशर, इससे के बाद वाला टॉपिक भी रिफ्रेशर ही है, फीडबैक से लिंक है. ओके, सो वी मूव अहेड. This is some theoretical concepts. Just in say briefly go through those concepts. So the concept is the homogeneous response.
the response, the output which is primarily is in response to the zero input. So mathematically, if the input is zero, we get some response from the output, and we construct the response at any input by adding that response. तो इस तरीके से ये इन्होंने दो definitions दी है. We start from here. The linearity allows one to use a single output corresponding to given input u to construct all remaining outputs which corresponds to u. So if we know one output to a particular input, then we can use it to construct the remaining outputs through the process of linearity, because we know that the same output will be the delayed version of the output. Let y be any other output associated with the given input u. Since we can write the zero input as 0 is equal to u minus u, by linearity we conclude that the homogeneous output is y minus yf, जो कि पहले हम assume करके आए. So must necessarily be an output corresponding to the zero input. So this is the output which correspond. इसी को अरेंज किया गया है मुख्तलिफ मेथड्स से, और इसी को जो है वो y is equal to then homogeneous output plus the output of function at u. इस तरीके में अरेंज किया गया. ये नीचे अगर देखें आप, इसमें सेकंड में ये इक्वेशन आ जाएगा. So this way, if u is, we primarily assume that u is input, generate a known output, so we can find the other outputs which are related with the same input by the using of principle of linearity. So conversely, suppose that one is given an arbitrary output yh corresponding to the zero input. So we conclude that so y is equal to the yf is another output which corresponding to u. Same definition है, but थोड़ा इसको different अंदाज में define किया. होमोजीनियस जो रिस्पॉन्स है उसको जो है वो कैसे जो आउटपुट है उसके साथ लिंक कर सकते हैं. इसी चीज को यहाँ समराइज किया है. Let yf be an output corresponding to any given input u. All outputs corresponding to u can be obtained by this formula. So if essentially we have the knowledge of homogeneous output, and similarly we have the knowledge of primarily the output by f. So where yh is an output corresponding to the zero input, this means that to construct all output corresponding to u, it is enough to know how to solve the following two problems. Find one particular output corresponding to the input u. एक u पे एक output मालूम कर लीजिए, and then find output corresponding to the zero input. और उससे क्या होगा कि we get the homogeneous response and we get the a response at a particular output, and we then add both to get the desired output of the system. This is the consequence of linearity. एक ही चीज को रिपीट किया गया. So this concept we already familiar with the impulse response, that we for any signal we can primarily use the step approximation, and this step approximation primarily involves a pulse
जिसको डायरेक्ट डेल्टा भी कहते हैं या डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं. So we take different forms of this pulse, which is primarily time shifted pulse, and then we can break the entire signal into a sum of product of those pulses. Okay, so it is primarily represented here in this form. So the input can be this function input signal can be broken down into different small signals, and those small signals can be primarily represented through a scaled and time shifted version of the pulse. And then we have a pulse train, जिसको हमने feedback control में पढ़ा था, pulse train, and then we can have a impulse response which can be used to primarily step approximate a continuous time signal. तो basically यही फार्मूला है जो बार बार जो है वो मुख्तलिफ शेप्स में जो है वो हमारे पास 2-3 स्लाइड्स में जो आने वाली है उनमें अपीयर होगा. So this slide primarily shows the concept of the limit on the delta. How we can primarily जो पहले आपने इससे पहले जो स्लाइड है उसमें आपने थोड़ा सा applying the limit we can primarily take an integration, and this integration we know that integration represents the area under the curve. Okay, for a interval, अगर हम इस interval को delta कहें, and for this whole from 0 to let's say t, for this whole curve, so we can primarily replace this limit delta approaches to 0 over the whole discrete versions to a continuous version in which can go 0 to t, but we can assume from 0 to infinity as well. So it will primarily give us the area under the curve in a physical interpretation. So the impulse response, consider a continuous time linear system with k inputs and m outputs. इससे पहले जो बताया गया था वो सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट के लिए. So there exists a signal such that for every input a corresponding output is given through this relation. और अगर आप इसमें देखें तो ये जो है ये वो प्राइमरी मैट्रिक्स सिग्नल है, और ये जो है ये जो इनपुट है उसका एक टाइम डिलेड जो प्राइमरी एट ए पर्टिकुलर टाइम जो है वो टाउ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंटीग्रेशन का जो प्राइमरी वेरिएबल है उसको. सो एट पर्टिकुलर टाइम सो वी गेट द full signal or the impulse response in that case. थोड़ा सा आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको स्टडी कर लें. The only aim is that finally we have a correlation जो है in the time domain, the correlation in the time domain जो कि primarily इस इक्वेशन को हम आमतौर पे कोरिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. And the same case is for the discrete part, और discrete part की जो expression है वो ये होगी. So we can represent the input signal as a linear combination of input multiplied with the direct delta
function, which is a delayed version of the direct delta at that particular time. Now, similarly, we can see the output in a similar manner. So this is the relation for the output, which is derived in a similar manner. So impulse response for the output. And finally, we have the final slide on the transfer function, and the transfer function इसमें हम next जो class होगी उसमें भी पढ़ेंगे. The transfer function is a Z transform of the output. So we have the transfer function which is represented with G, and this G is usually obtained as the transfer, the Laplace of the output divided by the input, y divided by u, and this caret sign is primarily show the Z transform. इस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन जो है इट प्राइमरली फिर हम सिस्टम को जो है वो ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें जो उसका इनपुट और आउटपुट होगा, एंड इनसाइड the system is represented in the form of a transfer function which is a Z transform of that matrix. Okay, students, this ends our today's review of concepts linked to the linear systems. इसी को जब हम इनके जो solution जो है वो हमने देखना है उसको इंशाल्लाह इसमें यूज़ करेंगे. नेक्स्ट सेशन इज़ आल्सो ऑन इम्पल्स एंड ट्रांसफ़र फंक्शंस, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. अच्छा, थोड़ा सा चूँकि टाइम बाकी है हमें मिड टर्म के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए, बट बिफोर दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए. जी स्टूडेंट्स, बिलाल आपका कोई सवाल है? नो सर. Any other question from any other students? मिड टर्म के हवाले नो सर. जी, मिड टर्म के हवाले से थैंक यू बेटा. मिड टर्म के हवाले से हम बात कर लेते हैं. मिड टर्म जो है वो आपका नेक्स्ट वीक में शेड्यूल है. जो हमने पढ़ा है इसी में से आपका मिड टर्म होगा इंशाल्लाह ताला. और जो है देयर आर सिंपल until now we have gone through. मैं इसको बंद करना चाहूँगा. Okay, we have gone through the 4 lecture slides. अगर से आज हमारा 5वां सेशन है, so we are short of 2 sessions. लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मिड टर्म जो है वो डिले हो. मिड टर्म के बाद हम जो है वो एक एक्स्ट्रा सेशन लेके इंशाल्लाह जो है वो कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे. बट द मिड टर्म विल कवर द 4 स्लाइड्स. ये 4 जो सेक्शंस है ना इनको कवर करेगा. आप लोगों के लिए मैं एक सैम्पल मिड टर्म बना के तो 1 से 2 दिन में जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के जो LMS है उस पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप एक दफ़ा उसको देख लें. दैट विल एक्ट एज ए सैम्पल मिड टर्म फॉर यू. ठीक है. और कोई सवाल होंगे तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा, ग्रुप में पूछ लीजिएगा. ठीक है जी बेटा. आप लोगों का कुछ? मेरा एक क्वेश्चन है. जी बेटा बोले. सर मेरा क्वेश्चन ये कि मिड टर्म कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का. 30 नंबर. जी 30 नंबर का होगा. 30 मार्क्स. ओके सर. जी ठीक है सर. तो हमारी जो किस तरह से हमारे डिवाइड होते हैं मार्क्स? 30 मार्क्स का हमारा मिड टर्म होता है और 70 मार्क्स का फाइनल होता है. बेटा सेशनल में मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ. 20 मार्क्स की एक असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ 2 हिस्सों में. ठीक है. मिड टर्म के बाद वो आपके LMS पे मैं आपको बता दूंगा.
तो 30 मार्क्स का पेपर होगा, तो इसमें 2 आवर्स का पेपर होता है। सर मिड टर्म कंडक्ट कहाँ पे होगा, एलएमएस पे ही होगा? ये जी ELMS है, उसमें ये LMS ही है, लेकिन वो स्टार्ट ई से होगा ना, ELMS। मैं समझा नहीं सर बात। बेटा ये ELMS है। आप LMS पे लॉग इन करते हैं ना, तो एग्जाम वालों ने जो मिड टर्म है उसके लिए ELMS बनाया हुआ है। तो अगर तो उन्होंने हमसे मांगे, जैसे फॉर एग्जांपल